कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक समिट में हिमाचल को हरित ऊर्जा से परिपूर्ण राज्य बनाने पर बल देने की प्राथमिकता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने बैठक में शामिल रहे सदस्यों से कही। इस अवसर पर लोक निर्माण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में गत दिनों आई आपदा के बाद प्रदेश सरकार के प्रयासों को भी बैठक में गिनवाया। उन्होंने बताया कि जिला शिमला के अंतर्गत ठियोग में वैली ब्रिज का निर्माण रिकॉर्ड समय पर पूर्ण किया गया, जिससे कि ऊपरी शिमला के सेब बहुल क्षेत्र से सेब को समय पर मंडी तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रेल और वायु यातायात आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए और अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाए, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में यातायात की बेहतर सुविधा मिल सके और देश और प्रदेश से आसानी से संपर्क स्थापित हो सके। उन्होंने फोर लेन निर्माण के अंतर्गत सरकार और निजी कंपनियों को इस बात का ध्यान रखने का आह्वान किया कि वे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में फोर लेन के लिए की जा रही कटिंग को मानकों के अनुरूप ही करना सुनिश्चित करें, जिससे बरसात और अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नुकसान कम से कम हो सके। इस अवसर पर सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इकोनॉमिक समिट की मीटिंग जो है सीआईआई द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गगन कपूर जी का कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं टॉप के हैं वो आज सब इसमें समिट में उपस्थित रहे और एक हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। उनकी जो समस्याएं हैं हमने वो सुनी और बहुत सारी बातें जो है सरकार के बिहाफ पे मैंने उनको एश्योर किया है ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी मदद हिमाचल सरकार द्वारा होगी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री की जो दिक्कत होगी उसका हम समाधान करेंगे। एक बहुत सार्थक चर्चा और एक बहुत लंबी चर्चा हुई है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी उपस्थित रहे हैं। हमने सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट आए, नए लोग आए और जो पुराने लोग जो हिमाचल प्रदेश में उद्योगपति यहाँ पे लगे हुए हैं उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पे उनको जो है नई इंसेंटिव्स और नई पॉलिसी उनके लिए भी जो है हम लाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे जो दो बड़े प्रोजेक्ट है बल ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी बहुत जल्दी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में और इन्वेस्टमेंट आए। अभी पिछले एक साल में जब से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनी है कोई 4,500 करोड़ रुपए का जो है वो MOUs हमने जो है वो अभी सिंगल विंडो में उसको क्लियरेंस किया है और जो बल ड्रग पार्क है उसके लिए हमने कोई 3500 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। तो लगभग पिछले एक साल में हमने कोई 10,000 करोड़ रुपए के जो है MOU साइन किए हैं। पिछली सरकार द्वारा MOU बहुत साइन किए गए थे, उनको मॉनिटर करके हमने उनमें से बहुत सारे लोगों को उनकी जो दिक्कतें थी उनको बुला करके उनको पूछ करके उनके साथ मीटिंग करके उनके जो NOCs थे उनको कहाँ दिक्कत थी हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की और हमने उन्हें कहा है कि आप हिमाचल प्रदेश में आओ, अपने उद्योग को स्थापित करो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक नौकरियों के मामले में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर नए उद्योग आए और पुराने उद्योग टिके रहे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो रोजगार जो है वो मिलेगा। We are working in tandem with the government of India, with our state government to boost the infrastructure in the state of Himachal Pradesh, and the theme for today, which is reviving growth momentum, fostering investment and creating sustainable infrastructure. I think this word sustainable is even more important after the catastrophe that we have faced in the state of Himachal Pradesh. So this theme, though it is obviously something that has been always spoken about, but as the Minister of Public Works in Himachal Pradesh, I am giving great emphasis to this one particular word, because we need to have holistic development in the state, not only for industries, that is obviously one of the most important segment in the state and the society, and for the overall development of the state in terms of GDP, in terms of per capita income, in terms of creating employment in the state, but also for other
aspects in the state. As we understand, Himachal is a state of hilly terrain, mountainous state, and it has a vast resources for development of tourism, horticulture, and homestays, and also a lot of agriculture that is undertaken in different parts of the state. So my prime focus as Minister of Public Works is to build all this infrastructure in the state and take it forward from where I have inherited and take it forward to a point where people from all over the country, whatever they come here for, whether it is investment in industries, whether it is the tourism sector that we want to develop, it should be a world-class structure and infrastructure that we have in Himachal Pradesh. We also understand that we are going through very turbulent times. We are going through a period where the state of Himachal Pradesh is in a debt of almost 80,000 crores. And I would not like to get into the politics of it, of what the predecessors have done and what it is, but we have to collectively work forward, keeping the liabilities, keeping the deficit that the state has, but at the same time, the capital infrastructure developmental works that we have planning to undertake, which the government is planning to undertake, and which our Honorable Chief Minister of the state, he has spoken about in length in the last financial budget. It is incumbent upon us to meet those words, to have that on the ground, and that is what we are working on. So the trade between the countries at the moment is £36 million, and we're hoping to double that. We see the potential to double that by 2030. And the reference to 2030 is about the roadmap which we've signed. It was signed by the two prime ministers of our countries in 2020. So it's a 10-year roadmap, and it's really bringing together the past, the present, and the future connections and collaborations between our two countries. So we've got a shared past. There's a lot we're doing at the moment, and we see the potential to do a lot more between the two countries in a wide range of fields, whether that's on e-mobility and climate change, technology, defence, and the living bridge, which is a unique bond between our two countries. There's a lot of potential there, and I think both countries want to make sure that we can make the most of that potential. So what we've been doing here in Himachal earlier on this year was we had a project with Shimla itself on e-mobility. So we were looking at the various options. As we all know, Shimla is a very congested city, and it's expanded rapidly over the years. So it's looking at how sharing British expertise and how Shimla can benefit from that, and look at the options that it can consider as it's considering its future and how to control the traffic and congestion in the city. So we've had a project which has been funded under a UK Aspire programme, and they've used the expertise from an area in the United Kingdom, in Scotland actually, in northern Scotland, which has very similar problems and issues. So it's very mountainous in northern Scotland. There's tourism there because it's an area of great beauty. So there's tourism, but it's that balance which Himachal has, which is the balance between encouraging tourism, which is good for the economy, but also you have to balance that with sustainable infrastructure so that you don't damage the very environment that you're promoting.